गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। आज से हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है और चैप्टर है डिमांड। कौन सा चैप्टर है? थियरी ऑफ डिमांड। तो आज हमारा चैप्टर का नाम है थियरी ऑफ डिमांड। इसके पहले पंखा बंद कर दो। इसके पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें हम लोगों को पढ़नी है। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या है? स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स Scope of microeconomics is refers to subject matter or the area is covered in microeconomics, and these are product pricing, factor pricing, study of behavior of consumer, forms of market, study location of industry, study of different sections of society, economic condition of different sections of society. सब तो ठीक है लेकिन नीचे साफ करने के लिए हो जाए इसे तो बोल रहा है ब्लैक शू खरीदो। ब्लैक शू लाओ। तो फिर क्या साफ करने के लिए? वो गंदा हो गया। प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या है? सुनने को मौका नहीं मिला। तो फिर ये सब मत बोला करो कि एब्सेंट थे या हम प्रेजेंट थे। आधे घंटे का क्लास यूट्यूब पे लाइव है, रिकॉर्डिंग है, उसका देख सकती हो। बैठो। फैक्टर प्राइसिंग क्या है? Factor pricing means factors of production. In it, we rewarded such as rent for land and salary and wages for salary and wages for interest on capital and profit for entrepreneur. हम लोग आज पढ़ेंगे कि डिमांड क्या है। थियरी ऑफ डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है थियरी ऑफ डिमांड। ये जो डिमांड है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि द इकोनॉमिक प्रॉब्लम विच एवरी इकोनॉमी इज फेसिंग, be it a developed economy, developing economy, underdeveloped economy, be it mixed economy, socialistic economy or a capitalistic economy,
every economy faces the problem of demand. Faces the problem of demand. Why demand is so very important? Demand is important because if demand goes beyond control, it leads to price rise. It leads to price rise. Say, for example, if the demand for a product or service in the economy is on the rise, and for any reason, the economy or the market is unable to meet the rising demand for that particular product or service, what will happen? The price of those products will be rising, leading to inflation. Leading to what? Inflation. And after inflation, what will happen? Those people who are rich, they can afford those goods, but people with lesser income will not be able to afford those goods. Isn't it? You talk about problem of choice. You talk about problem of choice. The problem of choice also arises because of demand. The problem of choice arises also because of demand. Demand is a concept in economics which is not only present in microeconomics but present in macroeconomics also. In fact, if we say that demand is a concept which is omnipresent. Omnipresent means present Everywhere. in economics, will not be an exaggeration. Exaggeration मतलब चीजों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहना। क्या कहा मैंने? दोबारा सुनिए। अगर आप ये कहें कि डिमांड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि न सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स में है बल्कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी है, या फिर संपूर्ण इकोनॉमिक्स में आप इसको देखेंगे, तो ये अतियोक्ति नहीं होगी। अतियोक्ति की इंग्लिश ओवर स्टेटमेंट या एग्जैजरेशन, राइट? मैंने कहा डिमांड माइक्रो में भी है और डिमांड मैक्रो में भी है। अब आपके मन में सवाल ये आएगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई as to when demand is micro and when demand is macro. Micro means I stands for individual and A stands for all, aggregate. So how to identify and how to distinguish whether demand is micro or demand is macro? Right? For this, what we need to do, we need to simply add a word called aggregate. We need to add the word aggregate as prefix to demand. As prefix to demand. So now demand becomes aggregate demand. And the concept of aggregate demand cannot be micro. It will be macro concept. Right? And when you simply say demand, it represents micro concept. Right? Got it? Yes, sir. Add the term, add the word aggregate. Aggregate to demand. As prefix. You get aggregate demand. And aggregate demand is a macroeconomic concept, whereas simply demand is a microeconomic concept. So therefore I mentioned that demand is a very important concept in economics, or variable in economics, because you study it not only in micro but also in macroeconomics. Now, how would you define the term demand? How would you define the term demand? क्या है इसका definition? Demand का जो definition है,
वो कहता है कि डिमांड हैज या उसके डेफिनेशन को समझने से पहले you need to understand the very origin of demand. The very origin of demand. आखिरकार डिमांड आया तो कहां से आया? डिमांड comes from wants. Demand has its origin in wants. Demand has its origin in wants. Right? Some people will argue that there is no difference between demand and want. But there is a huge difference between demand and want. Today's class will be focused on differentiating or understanding the differences between demand and want. How can we differentiate demand with want? As I mentioned, if you want to understand the meaning of the term demand, you must know the very origin of the term demand. And I also mentioned that demand has its origin in want. That is, had there been no want, there would not have been any demand. There would not have been any demand because the demand originates from wants. Right? Yes or no? Yes. So wants are the foundation of demand. Wants are the foundation of demand. Wants lead to demand. Isn't it? Yes. Therefore, in order to understand as to what demand is, we need to first of all understand as to what wants are. Isn't it? If you don't understand the meaning of wants itself, perhaps you won't be able to understand the concept of demand. Right, class? ठीक है. Now, let us move on to understanding as to what wants are. Each one of us sitting in the class have some want. Yes or no? Yes. Have you ever thought of defining the term want? Think and define the term want. I'm giving you 2 minutes. Think, how would you define the term want? Everybody has some wants. How would you define those terms or the term want for yourself? आप want को कैसे define करेंगे? सबके पास इच्छाएं हैं, लेकिन आप इच्छाओं को परिभाषित कैसे करेंगे? Willingness to buy something or have something is want. क्या सोच के तूने ये कहा? जब कुछ चाहिए होता है, जब कुछ लेना होता है, तो एक डिजायर आता है वो लेने का, तो वो want है. Sir, बोलो. sir, to have a desire or to wish to get something is called want. बैठ जाओ. Very good. Sir, for which purpose the things are made? For Which purpose the things are made? खड़ी हो सकती हैं आप. हाँ, खड़ी होकर बताइए. अब बोलिए. For which purpose the things are made? मतलब मतलब किस पर्पस के लिए बनाया गया है जो हमारे लाइफ में है? Resolve 13. बोलो. It refers to the desire or willing to purchase anything at a given price, and want can be different. Want can be different for everyone. Like rich people have something other want, like they want car or anything, but poor people have different types of want. According to wants, demand are being prepared. बैठ जाओ.
देखिए चीजों को जब आप पढ़ते हैं ना तो चीजों को एकदम सिंपल रख के पढ़िए, ठीक है, आसान शब्दों में पढ़िए, सोच को बहुत सिंपल रखिए और समझ को बड़ा कीजिए। तो वांट है क्या? आपने सोचा, आपने अपने आप को टटोला, ये सुनो, तो want is a feeling which is within you. Want is a feeling which is within you. It is eternal to you. Right? Nobody can see your want. Huh? Can your padosi see your want? No, sir. The answer is no. It is you who is only knowing as to what is your want, what you want to have. I got 3-4 answers, but all of you mentioned that willingness or desire or wish to have something is called. But let me give you some example. You are sitting in an examination hall with full preparation. With full preparation. पूरी व्यवस्था के साथ बैठे, ठीक है, तैयारी नहीं, व्यवस्था के साथ बैठे। जहां से भी पूछा जाएगा निकाल के लिखना चाहिए। ये सुनो, तो आप क्या चाहेंगे? लोग जो इन्विजिलेटर घूम रहे हैं वो आपकी व्यवस्था को पकड़ ले? तो यहाँ पे आपने क्या चाहा? किसी चीज का होना या नहीं होना? नहीं होना। Yes or no? Yes, sir. घर में जहाँ पे ज्वाइंट फैमिली रहती है, अगर आप में से कोई ज्वाइंट फैमिली में रहते होंगे, बचपन अगर आपने बिताया होगा, तो जो चीजें आपको खुद से मिल जाती है उसको खाने में आनंद नहीं आता। 2-3 आपस में भाई बहन मिलके जो चोरी करके खाने में मजा आता है, दैट इज समथिंग डिफरेंट, है ना? आप क्या चाहते हैं कि आप जब चोरी कर रहे हैं तो पकड़े जाए, है ना? एक आदमी देख रहा है कि कोई आ तो नहीं रहा है, एक आदमी सामान गायब कर रहा है, एक आदमी रखने का व्यवस्था कर रहा है। ऐसा तो तो वांट कहने का मतलब इट्स अ फीलिंग, फीलिंग टू हैव समथिंग, नॉट टू हैव समथिंग, राइट? इट्स अ फीलिंग ऑफ डूइंग समथिंग एंड नॉट डूइंग समथिंग. It is not always that you want to do something. Sometimes you also wish that you are not forced to do something. जैसे आप क्लास में बैठे, अब आप पढ़ के नहीं आए, मैंने पहले कह दिया कि भाई जो जिससे खड़ा कर देगा तो जवाब देगा क्लास से बाहर करना। तो आप धड़कन को तेज करके मुंह नीचे करके बैठे, करीब मेरे पास आ जाए। तो ये क्या हो गया? वांट हुआ। किसी चीज का होना या नहीं होना? नहीं होना। तो वांट कहने का मतलब हमेशा कुछ चीजों का होना ही नहीं है, नहीं होना भी। Now, as I mentioned, कि wants are feelings. Wants are feelings. So, can we say that wants are abstract in nature? Yes, sir. Abstract. आपने संज्ञा के प्रकार पढ़े होंगे, भाववाचक Yes, sir. संज्ञा. Abstract noun. Feelings. Wants are what? Abstract in nature. You cannot see it. You cannot measure it. Wants do not occupy any place, do they? The answer is no.
Wants are abstract. Wants are abstract. Now, one of the most famous definitions of economics. मैं थोड़ा एक आध दो क्लास लेने के बाद इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन पे भी आऊंगा, ठीक है? तो one of the most famous definitions of economics जिसको हम लोग साइंस ऑफ स्कार्सिटी कहते हैं, क्या कहते हैं? साइंस ऑफ स्कार्सिटी. स्कार्सिटी की हिंदी दुर्लभता, Yes, sir. कमी, Rare. किसी चीज की कमी होना. And this science of scarcity definition to economics was given by none other than Professor L. Robbins. L. Robbins. Leonel Robbins. What is his name? Leonel Robbins. And what he said, that every human being is forced to make a choice. Every human being is forced to make a choice. Because of two important reasons. One is, wants are unlimited, and the resources to fulfill those unlimited wants at a particular point of time are limited. Are limited. Isn't it? Had your wants been also limited, perhaps the problem of choice was not there. Right? Or other way around. If your resources availability would also have been unlimited, you would not have bothered to make sure that the use of resources is optimized. Optimizing best possible use. Yes, sir. आप अभी बहुत परेशान हो जाते हैं अगर रिसोर्सेज रुपया खर्च हो जाता है तो आपको चिंता लगने लगती है. अगर आप जिस तरीके से खर्च करना चाहते हैं उस तरीके से नहीं होता तो आप परेशान हो जाते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि आपको मालूम है रिसोर्सेज लिमिटेड है. रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड. आप बाजार जाते हैं, यू गो टू अ शॉप टू बाय सम क्लोथ्स फॉर यू, और वो दिखाना शुरू करता है. आपके मन में ख्याल जरूर आता है कि काश ये सब मेरे घर में वाटों में टंगा रहता, रोज एक निकाल के. यस और नो? Yes. लेकिन तुरंत धरती पे आते हैं ना, ऐसा हो नहीं सकता. यस और नो? फिर आप क्या कहते हैं कि भैया जेब में इतना ही पैसा, इस रेंज का दिखाइए, इतने में सही है. ऐसा ही है ना? अब जैसे मैं मिठाई की दुकान पे जाता हूँ तो मुझे तो लगता है कि हर मिठाई अच्छी है. समस्या इधर से लेके पहले उधर तक घूमते हैं और फिर उधर से एक राउंड इधर लेके आते हैं. अभी भी मैं जब सिटी जाता हूँ तो ही मस्ट बी नोइंग कि सिटी में एक दुकान है सिटी चौक पे, सिटी स्वीट हाउस की. तो बचपन से मैं वहीं पे मिठाई खाता हूँ. ठीक है. एंड आई बहुत पेशेंटली मैं वेट करता हूँ कि कब सिटी जाए, और सिटी जाने के ढूंढने मतलब जाने का मैं बहाना ढूंढता रहता हूँ. इफ आई कुड गो टू सिटी. कहने का मतलब ये कि हर एक व्यक्ति बंदिश में बंधा है. कौन सी बंदिश? अनलिमिटेड वांट एक और दूसरी ओर लिमिटेड रिसोर्सेज. Now being a consumer, being a human being, if you have unlimited want and limited resources, what does this mean? What does this mean? My question to you is, with unlimited want and limited resource at a particular point of time, would you be able to satisfy all of your wants at the same moment? No, sir. The answer is big no. Why? Because your wants are unlimited, but the resources to satisfy those unlimited wants are Limited. It means you won't be able to satisfy
satisfy all of your wants. You won't be able to satisfy all of your wants. You could satisfy only few of the wants. You could satisfy only few of the wants, and others will remain unsatisfied or dissatisfied. Yes or no? Which of the wants would you prefer to satisfy? The wants which are more important or which are less important? Which are more important. You will make a choice as to which of the wants are more important. Yes or no? Yes, sir. You are forced to make a choice because you have limited resources. Right? Yes, sir. Now you have identified that you are going to satisfy the most important want out of the unlimited wants that you have. Then comes the turn of resources. Resources are limited. Where to use the resources? Resources will be used to satisfy most important want which you have chosen, or to lesser important wants. Most Most important wants which you have identified. So you have again made a choice as to where the resources are supposed to be used. You have again made a choice as to where the resources are supposed to be used. Yes or no? Yes, sir. Both in case of want and in case of resource, you have made a choice. You have made a choice. Now, as I mentioned, if at a particular point of time, if you have unlimited wants and limited resource, if at a particular point of time, you have unlimited want and limited resource, what does this imply? It implies that at that particular point of time, only few of the wants will be satisfied and rest will remain unsatisfied. Yes or no? Yes, sir. अब आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपसे बताने जा रहा हूं. Those wants which are satiable in nature, those wants which can be satisfied are called demand. समझ गए? तो आपके पास ये जो अनंत इच्छाएं थी और सीमित संसाधन जिनमें से आपने ये तय किया कि इन इच्छाओं को पूर्ण किया जा सकता है, बाकियों को आपने पूर्ण करने का नहीं सोचा, तो वैसी इच्छाएं जिसको संतुष्ट किया जा सके उसको हम लोग डिमांड कहते हैं. जो संतुष्ट न की जा सके वो डिमांड की श्रेणी में नहीं आती, वो वांट ही रह जाएंगी. समझ गए? तो पहला डेफिनेशन तो मैंने ये दे दिया. क्या दिया पहला डेफिनेशन मैंने? Those wants which can be satisfied are called demand. जो सेटिस्फाई नहीं हो पाया उसको हम लोग क्या कहेंगे? वॉन्ट्स ही कहेंगे. यस और नो? अब मैं एक और लाइन आपसे शेयर कर रहा हूं, बताइएगा सही है या गलत है. ध्यान से सुनिएगा. लाइन क्या है? All demands are want, but all wants are not demand. True or false? True, sir. दोबारा से लाइन सुन लीजिए. All demands are want, but all wants are not demand. True या false? True. क्यों? क्योंकि डिमांड बना है कहां से? वांट से. तो जितना डिमांड है वो सारा का सारा वांट तो है ही, लेकिन क्या सारी इच्छाएं मांग है? जवाब है नहीं. क्यों? क्योंकि वैसी इच्छाएं मांग होंगी जिसको आप संतुष्ट करने की अवस्था में हो. समझ गए? ये पहली परिभाषा थी, या ये जो पहला मीनिंग था, पहला कॉन्सेप्ट था किसके लिए? डिमांड के लिए. समझ गए? तो दो तीन क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा. पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन डिमांड एंड वांट. डिफरेंशिएट बिटवीन डिमांड एंड वांट. दूसरा क्वेश्चन है
define the term demand. Define the term demand. How many students were there in the previous class? 58. 59. 59. Everybody is done? Yes, sir. ठीक है। दो और डेफिनेशन लिख लीजिए इसका। एक तो मैंने बता दिया, क्या बताया मैंने? पहला डेफिनेशन डिमांड का, एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन का मतलब अतियोक्ति। अतियोक्ति कहने का मतलब किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर ओवर स्टेट। डेफिनेशन नंबर 2 लिखिए। effective bonds are called demand. Effective bonds are called demand.
इफेक्टिव बॉन्ड्स को इन्वर्टेड कॉमा में डाल दीजिएगा। नेक्स्ट, तीसरा डेफिनेशन, ये सब केवल लिखवा रहे हैं, इसको समझाना बाकी है। Assuming other things to remain constant, assuming other things to remain constant, comma, at a given time and place, at a given time and place, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कीजिएगा। डिमांड इज the units of a product, the units of a product that a consumer is ready to buy, that a consumer is ready to buy at various levels of prices, at various levels of prices, full stop, inverted comma close. तो दो डेफिनेशन और हम लोगों ने लिखा। पहला क्या? Effective bonds are called demand. Effective bonds are called demand. और दूसरा Assuming other products in the area of demand at a given time, there is demand and limit for product चलो ठीक है। तो अब ये दोनों डेफिनेशंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास में कहीं किसी को कुछ पूछना है, कुछ ऐसी चीजें जो आपको समझ में ना आई हो, समथिंग दैट यू वांट टू आस्क क्लास? एवरीथिंग इज क्लियर? चलो ठीक है। स्टॉपिंग द लाइव स्ट्रीमिंग नाउ।